All right, so this is October, November 17, paper 2, variant 2. So let's start with this. Okay, so first of all, you've got this question number 1. Sarah buys a new car. The cash price of the cash price of the car is $4,500. Price to her, that is $4,500. She can pay for the car using option A or option B, right? So you've got, so she has two options for paying for the car. पहली option क्या है? She pays 1/5 of the cash price. ठीक है, इसकी 1/5 pay कर देती है पहले, and then 12 monthly payments of $340. Okay. अच्छा, दूसरी क्या है? Pay 12% of the cash price and then 24 monthly payments of $195. Okay. So we have to figure out which option is cheaper and by how much. हम दोनों की total amount figure out कर लेते हैं, right? So so cash price का मतलब है अगर foreign जो है वो पूरी amount जो है वो एक go में उसी point पे जो है on spot payment कर देती है, then it costs $4,500, right? लेकिन वो installments पे अगर लेती है तो that might of course cost more than the base price. 4,500 ज़्यादा cost करेगी, लेकिन दोनों की कितने total होगी? Let's figure that out. अच्छा, यहाँ पे देखिए, it says 1/5 of the cash price. सबसे पहले इसको ये पे करना पड़ेगा. Let's evaluate that. 1/5 of the cash price, that's 4,500. उसका 1/5 evaluate कर लेते हैं. 4,500 over 5, what does that give us? That is 900. So we have 900 here, and then 12 monthly payments of $340. So that just means 12 multiplied by 340. What is that? That is 4080. So total amount कितनी बन गई है? The total amount turns out to be 4,980. So option A के अंदर को इतना पे करना पड़े, ठीक है? Now let's look at option number 2. Option number 2 में क्या है? Option B में क्या है? She pays 12% of the cash price. So सबसे पहले 12% of 4,500, उसका 12% निकाल लेते हैं. So that's 12 over 100 multiplied by 0.12 into 4,500, that's 12%. So ये देखते हैं क्या आता है. So that's 0.12 into 4,500. 12% of that is 540, and then 24 monthly payments of 195. So 24 into 195. Let's see what that gives us. That is 4,680. So what is the total then? The total in this case turns out to be 5,220. Okay. अब जिसमें 24 monthly payments थी, उसके अंदर total amount जो है वो थोड़ी ज़्यादा बन रही है, 5,220, right? So which option is cheaper? Option A is cheaper. So option A is cheaper. सबसे पहले तो हम ये लिख दिया, but by how much? We have to find the difference. कि difference उन दोनों के अंदर कितना है? 5,220 option B में था, उसमें से आप minus कर दें 4,980 को, और वो आपके पास आ जाएगा कि difference कितना उनका 4,980 इसमें से subtract किया, that is 240. Okay, so this is cheaper by $240. So option A is cheaper by this much. It's cheaper by $240, right? So I think that was pretty straightforward. Let's look at part B. So part B में वो कहती है, Sarah's car uses 5.2 liters of petrol for each 100 kilometers she drives. Okay, 5.2 liter petrol लगता है 100 kilometers के अंदर. Okay, now petrol costs 0.85 per liter, and Sarah drives 240 kilometers. Right? ये information दी हुई है. आपको find क्या करना है? Calculate the cost of the petrol used for this journey. Give your answer correct to the nearest cent. Cent क्या होते हैं? $1 has 100 cents. Okay? $1 के अंदर 100 cents होते हैं. So you can say $0.01. That's equivalent to 1 cent. तो आपने 2 decimal places तक आंसर देना है डॉलर्स के अंदर. अगर आप दोगे, अगर नियरेस्ट सेंट में लिखा हो तो मतलब ये आपको 2 decimal places देना है, because that is 1 cent. 0.01 is 1 cent. आपको 2 decimal places तक अपना आंसर देना है. अच्छा, now 5.2 liters लगते हैं 100 kilometers के ऊपर, तो 240 के ऊपर कितने लगेंगे? Let's figure that out first. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. So we have liters. Okay, we have liters and we have the distance. अच्छा, 5.2 liters लगते हैं किसके ऊपर? 100 kilometers के ऊपर. तो 240 kilometers के ऊपर कितने लगेंगे? We don't know that. Let's figure that out. So that's going to be 240 into 5.2.
right? As usual, we just cross multiply there. That's equal to 100 times x. Okay, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, that is 240 into 5.2 divided by 100. Let's figure that out. That gives us 12.4. 12.4 48. 12.48. Okay, so this is 12.48. ठीक है, उसको इतने लीटर्स जो है उसको पेट्रोल चाहिए to travel 240 kilometers, right? So 240 kilometers के लिए 12.48 liters of petrol are needed. Now, the petrol costs $0.85 per liter. 1 लीटर की कॉस्ट जो है that is $0.85. 12.48 लीटर से कितनी होगी? That's just 12.48 multiplied by 0.85. 1 लीटर कितनी है ना? 0.85. तो आप 12.48 लीटर से कितनी होगी? Just multiply these two numbers. आप इसको भी रेशियो से करना चाहते हो, आप उसी तरह भी कर सकते हो. You can say 1 liter costs $0.85. Okay, so how much would 12.48 liters cost? And then you can find this value of y, let's say, right? That will give you the same thing. 12.48 को 0.85 से multiply करोगे, and you will see what that number turns out to be. So 12.48 into 0.85, that is 10.61. So मेरे पास यहाँ पे आता है 10.608 to the nearest cent, यानी कि 2 decimal places तक हमारे पास क्या बन जाएगा ये? That's 10.61. That is the result there. Okay, so this is the amount that she will spend on that. Okay, all right. Let's look at the next part. So at any point, if you have any question, of course, you can just stop. At any point, नहीं उस question के बाद आपको कोई question दो, आपको कोई problem है तो मुझे बता दें. Chat box में साथ-साथ लिखते भी जा सकते हैं. If you have to ask something verbally, wait for the question to end. अगर आप साथ-साथ अपने कुछ पूछना है तो chat box में आप बस नाम पे type कर दें, so I can see, I can respond to them right there. Okay, so Sarah pays a total of $322. $322 for her car insurance. Okay, I was in $322 paid here. The total is made up of basic charge plus 15% sales tax. Calculate the amount of sales tax that Sarah pays. Okay, now it's slightly tricky. So one, quick way that you might think of is कि अच्छा $322 जो है वो car insurance की price है, 15% sales tax है. So you might be tempted to just, calculate 15% of 322, right? You might be tempted to do that, but that's not correct because sales tax किस amount के ऊपर होगा? जो आपकी original amount है उसके ऊपर होगा. Sales tax किसके ऊपर होगा? जो आपकी original amount है उसके ऊपर आपका sales tax होगा. Okay? अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? Basic charge, मतलब basic charge जो भी था उस पे आपने 15% उसका add करना. Now let's say this basic charge that we had, let's say this was x, तो हमारे पास क्या होगा? x को आपने 15% से increase किया. One way to do this is कि आपके पास basic charge ये है, 15% और add कर लो इसके अंदर, 15/100 times x. This should give you 322, right? That's one way to put this. और हमने वही जो percentages का direct तरीका हमने देखा था, आपके पास original x था, right? Original आपके पास x था, x को आपने कितना increase करना है? 15% से. That's the same thing as saying 100% था आपके पास, उसको आपने 15% add करना है उसके अंदर. What do you get? You get 115%, right? Or you can say this is 115 over 100. So आप क्या कर सकते थे directly? 115 over 100 times x, that is equal to 322, right? So ये पहला step skip करके you could have written this directly if you wanted, but this is what you get. ठीक है, यहाँ से आपके पास x की value आ जाएगी. x क्या है? x is the basic charge. जो initial amount थी वो उसकी बात हो रही है, right? Remember, आपके पास एक initial amount थी, उसके ऊपर 15% tax लगा, उसका total turns out to be 322. जो 15% tax है ये आपकी original amount के ऊपर. Okay, so इसलिए हम original amount 15% increase करेंगे, that will turn out to be 322. तो यहाँ से हमारे पास x की value आएगी, that's 322 multiplied by 100 divided by 115, and that is 280. ये हमारे पास basic charge आ गया, ठीक है, initial amount. अब sales tax कैसे आएगा? Sales tax is 15% of this. इसका calculate कर लेते हैं. 15/100 into 280.
and you can see what that is. This turns out to be $42. This is $42. So this amount is $42. Therefore, sales tax जो हमारे पास होगा, that is $42. Right? So you can verify this as well. 280 plus 42, that gives you 322. Okay? Is that clear to everyone? Any problems with this question? No, sir. Sir, सर मैंने 115 टेबल वाले से Sorry, अब्दुल्ला दोबारा बताएं. सर मैंने ना टेबल वाले से किया एंड टेबल वाले से काफी जल्दी आंसर आ गया था बट उसमें एक थोड़ा इशू आ रहा था कि मतलब 115 के नीचे हमने 322 लिखना कि टेबल वाला क्या कह रहे हैं, किस तरह से? एक टेबल वाला भी एक मेथड होता है ना कि आप टेबल वाले से भी आप कर सकते हैं लाइक पहले 100 एंड देन उसके आगे लिखते हो कि 100 जैसे अब 15% टैक्स उस पे और लगे तो हम लिखेंगे उसको 115 एंड देन अच्छा, तो आप बेसिकली रेशियो से कह रहे हो, आपके रेशियो से कर ले तो बेसिकली 100% आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी, ठीक है, 100 वाज योर ओरिजिनल, ठीक है, अब वो आपका x है, ठीक है, उसको 115 कर दिया, उसको 15% इंक्रीज किया, दैट बिकम्स 322, ठीक है, इससे आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी 280, ओके, इससे आपके पास ये अमाउंट आएगी, दैट्स 115 फिर उसको माइनस कर देना 322 322 into 100, यहाँ से आपके पास x की अमाउंट आएगी, that is again 280, फिर इसका आपको 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा, that is the sales tax, right? One other way could have been, आपको पता है कि 115 जो है वो 322 है, अब इसी की तरह यहीं पे आप एक और चीज भी ऐड कर सकते थे, you could do it directly like this, आप ये भी कर सकते थे, आपको ये पता होना चाहिए ओरिजिनल was 100 आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल आपकी जो भी अमाउंट थी उसको आपने 15% इंक्रीज किया, दैट इज 322, अब 100 का 15% जो है दैट्स योर सेल्स टैक्स, इसको अगर हम y कह दें लेट्स से, दैट्स योर या सेल्स टैक्स कह देते हैं, 15% इज सेल्स टैक्स, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते थे, सो दैट वुड गिव यू 115 टाइम्स सेल्स टैक्स equal to 322 into 15, right? But that might be a bit too complicated for you at this point. So अगर आपको ये पहले वाला समझ आ गया तो that's it, आपके पास उससे वही रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास x equal to 80 आएगा यहाँ से, उसका फिर आप क्या करोगे, 15% कैलकुलेट करोगे and that will give you 42 from that. Okay? yes sir thank you so much अच्छा, 115 कैसे आया? Okay, so Alicia is saying how do you get 115? So देखें, आपके पास जो भी ओरिजिनल चार्ज था, we don't know what that we don't know what that was, right? Let's say that was 100%, that was the original, ठीक है, आपको ओरिजिनल अमाउंट थी 100%, उसमें आपने 15% ऐड किया, right? 15% ऐड किया, what do you get in total? 115%. 115% क्या मतलब है? 115 over 100, right? So that's what we're doing here. आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे if you wanted, आप x plus 15 over 100 लिखें. So again, there are many different options. You can choose what you are comfortable with. Some people find one method easier, some other people find another method easier. So it's your choice. Whatever you are more comfortable with, you can go with that. Okay, आप इस तरह लिख सकते हो x plus 15 over 100 x, and then you can add them up और उसको आपके पास ये आ जाएगा, equate कर दें 322 के साथ. अच्छा, so now what we are doing is we are first finding the basic charge. हम ये basic charge figure out कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको x कहा, तो x को 15% increase किया, that should equal 322. Once we have found that basic charge, this is 280, हमें result क्या देना है? They're not asking you for the basic charge, की basic charge कितना था, they're asking you for the amount of sales tax that is paid. Sales tax की बात करें, वो sales tax कितना था? That's 280 का 15%, right? Or you can also do it this way, 322 आप pay कर रहे हो, उसमें से 280 minus कर दें, that also gives you 42, right? You can do it either way. The 322 आपके पास total amount थी, basic जो है 280 था, तो बाकी sales tax होएगा, that's a 322 minus 280, that can also give you 42. That's the same thing as well.
Okay. Yes. All right, good. Let's look at let's look at the next question. Okay. Now, a company asks their employees how long they took to travel to work one day. The table summarizes the times for 120 employees. Okay, so say times आ रहे हैं, उनके frequencies आ रही हैं. You have to complete this cumulative frequency table that is below. Okay, so चलो आपने cumulative frequency table बनाना है. All you have to do is 20 से नीचे के 0 से नीचे तो कोई भी नहीं है. 20 से नीचे कौन है? That's just 12. Well, Sorry, where did that go? Okay, that's just 12. अच्छा, फिर 20 से 40 तक 28 है. 40 से नीचे नीचे कितने होंगे total? The sum of these 40. two, 12 and 28, that is 40. 40 के अंदर फिर 45 और ऐड कर देंगे. That's 85. 85 के अंदर ये 22 और ऐड कर दिया. That gives 107. us 107. 107. 107 के साथ 13 और ऐड करेंगे तो ये 120 आ जाएगा. That confirms that your calculations are correct. Okay, so now you've got these numbers. इनको use करके you have to draw a smooth cumulative frequency curve to represent these results. Okay, so हम क्या करेंगे? सिर्फ points को plot करेंगे. 0 पे 0 है, so we've got 1 point here. We have 20 and 12. So 20 and 12, that's going to be here. 40 and 40, 40 and 40. 60, 85, 60 and 85, that's here. 80 and 107. 80 के ऊपर we have 107 here somewhere. So now we have to be careful here. ये छोटा box क्या represent कर रहा है? Total 20 का difference है और ये 10 boxes है. Every small box is representing 2 units. ठीक है? एक छोटा box 2 units को represent कर रहा है. So 107 हमें देखना है. So how do we do that? 102, 104, 106, and then half box above. 3.5 boxes. 100 से ऊपर जाएंगे. That is going to be this point here. Okay. Achha. Then finally we have 100 and 120. That's just this point here. ठीक है. अब यहाँ पे हमने curve draw कर देनी है. So the curve may look something like this. Let's draw that curve. Again, you should make sure you're drawing it using a pencil. Do not use a pen ताकि आप उसको erase कर सको. कोई part smooth नहीं बनता. So you should be able to erase that and redraw that if needed. तो ये digital में बनाना और भी मुश्किल है, तो I have to erase a few times to make it work. Okay, so this is the curve that I have. Okay, it looks something like this. इस तरह की curve बन गया आपके पास. This is the cumulative frequency curve. You have to be a bit more careful than I was here. Points से pass करना चाहिए. Points के ऊपर नीचे इतना नहीं होना चाहिए. For example, here it could have been better. Now that I've drawn it, I'm not going to redraw it. इसी तरह ये वाला point, it could have been a bit better. कि वो आप उस point से उसको pass कराते. So you can actually try that. This is better. वहाँ पे इसके पास थोड़ा सा इसको adjust कर सकता हूँ. Similarly here, close to the point, I can try to make it a bit better. ठीक है. And you have it like this here. Okay, ये हमारी cumulative frequency curve होगी. Make sure that's smooth. अच्छा, use the curve to estimate the median time. Median time आपको निकालना है सबसे पहले. अच्छा, median के लिए क्या करते हैं? What is the process? Y-axis पे देखेंगे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक numbers हैं. Yeah, we're going from 0 to 120. ठीक है, 0 से 120 तक जा रहे हैं. उसका half कर लेंगे. 120 60. over 2, that is 60. So we go on the curve. 60 पे जाके देखेंगे
हमारे पास ग्राफ जो है किधर से पास करें. So that's this point here. अगर हम x axis के ऊपर देखें, that point is somewhere here. So on my graph, this is 49. 49. So on my graph, it's coming out to be 49 minutes. ठीक है, तो आपने क्या किया, y axis पे गए आप, y axis पे जाके you looked at 60 के against आपने जाके देख रहे हैं नंबर कौन सा है. ठीक है, so for me it's 49, so that's my median. अच्छा, then it says the interquartile range. Interquartile range कैसे निकालते हैं? It's the upper quartile minus the lower quartile. Upper quartile क्या होता है? 75% या 3/4 से multiply कर दें. So 120 का 75%, or you can say 3/4 से multiply किया. What does that give you? That is going to give you 90. ठीक है, इसी तरह से 120 को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, that's going to give you 30. ठीक है, ये हमें चाहिए लोअर क्वार्टाइल के लिए, ऊपर हमें चाहिए अपर क्वार्टाइल के लिए. बट दीज आर नॉट द लोअर क्वार्टाइल, द अपर क्वार्टाइल्स. इनके अगेंस्ट हमें एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखनी है. ठीक है, सो 90 के अगेंस्ट जाके देखते हैं. 90 इज राइट हियर. 90 के अगेंस्ट मेरे पास क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर? सर लोअर क्वार्टाइल 25% लेते हैं ना? यस, 25% एग्जैक्टली. लोअर क्वार्टाइल के लिए कितने? 25%. So 60 आता है. नहीं, 50% 60 आता है. 120 का अगर आप 50% करो, 25% करोगे, that will be 30. जी सर, 30 सच कहना था, उसका वो डिफरेंस बता रहा था. या ओके. अच्छा, नहीं, डिफरेंस नहीं यहाँ से निकालते, डिफरेंस यहाँ से निकालते. दिस दैट्स नॉट योर इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज इनका डिफरेंस नहीं होती है. पहले आपको अपर क्वार्टाइल 90 नहीं है, लोअर क्वार्टाइल 30 नहीं है, उनके लिए वैल्यूज हमने देखी हैं. सो दिस इज द 30th वैल्यू, यू कैन से दिस इज 90th वैल्यू. अभी जाके हमें वैल्यू देखनी है. 90 के अगेंस्ट हम जाके देखेंगे हमारे पास ग्राफ में क्या आता है एक्स एक्सिस के ऊपर. दैट्स दिस वैल्यू हियर. दिस इज 64 फॉर मी. ये मेरा अपर क्वार्टाइल होगा. अपर क्वार्टाइल इज 64. इट्स नॉट 90. 90 नहीं है. 90 पे जाके मैं जाके देखूंगा कि मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है. That's 64. This is what my upper quartile is. Similarly, 120 का 25th percentile लिया, that comes out to be 30. So 30th value चाहिए मुझे, right? 30th value कैसे आएगी? मैं नीचे जाके ग्राफ पे जाता हूँ. 30 मेरे पास ये नंबर आ गया, इसके ऊपर मैं ग्राफ पे देखता हूँ. Where is it cutting? I go on the x-axis here, and this is 34 for me. This is my lower quartile. Lower quartile में जाके लिखूंगा. This is 34. 64 minus 34, that is 30. This is my interquartile range. Okay? Does this make sense? यस सर, आंसर अब सही आ रही मेरी भी. पहले मैं वैसे ही कर रहा था 60 के साथ करके. y एक्सिस पे नहीं देखना, हमेशा मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सारी वैल्यूज देखनी आपने एक्स एक्सिस से होती हैं. आप सिर्फ y एक्सिस पे देखते हो. अच्छा, किसके अगेंस्ट जाके वैल्यू देखनी है? तो असल में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपने यहाँ से मिलेगी एक्स एक्सिस से. This was 49. That was our median. Okay, let's go and look at the next part. Calculate an estimate of the mean time taken for the employees to travel to work. So calculate करना है आपको estimate for the mean. यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं हमारे पास टेबल given है. So you can use that table to find an estimate for the mean. So what I'm going to do here is just copy this here. I have that table visible. Yeah, this is the table that we have. Now, all you have to do is try to find the midpoint. 0 to 20, the midpoint is 10. Then you have 30, 50, 70, and 90. Okay, these are the midpoints for all those values. This is my f. This is my x. Variable midpoints. I have to find fx from here. 12 into 10, that's 120. 28 into 30, what's that? So जल्दी से calculate करते हैं. 28 into 30, that is 840. So 45 into 50, that's 2250. 22 into 70, that's 1540.
and 13 into 90, that is 1170. ठीक है, ये मेरे पास सारी values आ गई. I have sigma f कितना था मेरे पास in sub frequencies का sum, we know that is 120. ठीक है, total लोग 120 थे. Sigma fx कितना आएगा? That's the sum of all of these numbers. इन सब numbers का add करते हैं, ये देखते हैं क्या आता है. 120 plus 840 plus 2250 plus 1540. Just be careful जब आप इसको values calculator के अंदर input कर रहे हो, मैं आपको कोई careless error नहीं हो रहे हो. So 1540 plus 1170. Okay, so this gives me 5920. I would recommend that you show this working. आप ये show करेंगे working, it's 3 marks. अगर आपकी कोई गलती से कोई error हो भी जाता है, at least you will get partial marks for that. अगर आप working नहीं show करोगे, आप directly इस तरह से लिख दोगे mean is equal to sigma fx over sigma f, और आप यहाँ पे directly values लिख देते. That अगर तो वो सही हो गया तो you can get full marks for that. But if it ends up being wrong, आपको partial marks भी नहीं मिलेंगे, right? So you have to be very careful that you show your working here. आपने working show करनी है पूरी यहाँ पे. ये सारे fx आप निकाल रहे हो, ये table के अंदर ये row add कर दें, so that is generally enough. आपने sigma fx over sigma f करना है यहाँ पे, so you just do that. That is going to turn out to be 5920 divided by 120, and that gives us 49.33. Yeah, that's the mean time that we have, 49.33 minutes. ठीक है? No, it's not necessary to draw the table again, Manahil. It's not necessary. आपके पास जो table दिया होगा वहां पे, जो table आपके पास दिया होगा, उसी के साथ आपने ना ये आपने जो है वो quiz छोटा सा कर लें. आप यहाँ पे f लिख दें और आप यहाँ पे ऊपर मिड पॉइंट्स की लाइन बना लें इसी के साथ. मैंने सिर्फ दोबारा कॉपी इसलिए किया था because I wanted that to be visible in front of me. आपके पास वो पेपर पे होगा. You can just add these rows to the table. You can add 10, 20, 10, 30 and so on. Similarly, you can add this row here fx. वो भी आप यहीं पे add कर सकते हो इसी के साथ. ठीक है, so that's completely okay. All right. So this is our mean. Now let's move on. Anya makes t-shirts. The matrix M shows the number of t-shirts for different types she makes in 1 week. Okay, so small, medium, and large, and then you have men and women. So for example, this 40 represents the number of medium-sized t-shirts for women. Right? ये 6 numbers, हर एक जो है वो different category को represent कर रहे हैं. अच्छा, Anya sells all of these t-shirts to a shop. जितनी भी total t-shirts थी, she sold all of them. She charges $5 for each small t-shirt. $5 for each small t-shirt, and $6 for one medium t-shirt, and $8 for a large t-shirt. Represent these amounts in a 3x1 column matrix. 3x1 का क्या मतलब होता है? Remember, हम जब order लिखते हैं किसी matrix का, it's m by n. जो पहला number होता है, that's the number of rows, and then the second number is the number of columns. Right? पहला rows होता है, दूसरा columns होता है. ठीक है? या फिर उसका m by n की जगह आप उसको उसी तरह से याद रख लो. R and C भी लिख सकते हैं, जिससे row into column. Right? We got rows into columns, rows by columns, 3x1. तो 3 rows होनी चाहिए, 1 column होना चाहिए. So it's a column matrix that looks like this. इस तरह का matrix होगा. ठीक है? Column matrix. ठीक है, इनको हम represent कर देते हैं. So we have small, medium, and large. We've got 5 here, we've got 6 here, and we have 8 here. Yeah, that's how you have to represent it. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं work out P that is equal to M into N. आपको P matrix निकालना है. P matrix क्या है? It's M multiplied by N. M into N. अच्छा, दोनों matrix आपको multiply करना है. N matrix क्या है? That is 10, 25, 30,
You have 20, 40, and 25. Okay. The n matrix is 5, 6, and 8. So what do? How do we multiply two matrices? अब इनको multiply कर सकते हैं ना? Multiply इनको कब कर सकते हैं? अब देखिए, so remember, आपके पास यहाँ पे पहले का ऑर्डर क्या है? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर इज कितनी रोज है? 2 rows. You have 2 rows and you have 3 columns. 2 by 3 matrix है पहला वाला. The second matrix is 3 by 1. जब भी आपके पास ये दोनों नंबर सेम होते हैं, you can multiply them. अगर ये नंबर सेम नहीं होते, आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, राइट? बिकॉज आपको पता है ना, यहाँ पे हम ये एरो लगाते हैं इस तरह से कि 3 नंबर्स इधर हैं, यही 3 नंबर्स इधर हैं. अगर ये इक्वल नहीं हो तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. दीज नंबर्स आर गोइंग टू बी इक्वल, बट यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन गेट कंफ्यूज्ड समटाइम्स. जो आपका फाइनल मैट्रिक्स आएगा ना यहाँ पे रिजल्ट, दैट्स गोइंग टू बी दिस मैट्रिक्स. ये बाकी दोनों जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, 2 by 1 का मैट्रिक्स आपके पास आना चाहिए, राइट? सो दैट्स जस्ट टू इंश्योर कि आपको पता हो कि आपका रिजल्ट जो है ना इस फॉर्म का होना चाहिए, 2 by 1, 2 rows and 1 column. अच्छा, लेट्स जस्ट अप्लाई the method of matrix multiplication. What do? We take this row. So हमने 2 by 1 बनाना है, राइट? सर ये फर्स्ट पार्ट नहीं सर समझ आया. ये मैं उसमें क्या नहीं समझ आया? सर ये जो अपना है इसका पैटर्न है सर इसका. देखिए 3 by 1 था ना, 3 rows and 1 column. कॉलम मैट्रिक्स बनाना है. इसके कितने कितनी रोज हैं? 1 2 3. You need 3 rows and 1 column. एक कॉलम होना चाहिए. कॉलम आपका सिर्फ एक है इस तरह से, राइट? 3 by 1 का मैट्रिक्स निकालना. अब कौन-कौन सी हैं? स्मॉल की उसने चार्जेस लिखे हैं, दैट्स $5. देन यू हैव मीडियम और लार्ज, उसी ऑर्डर के अंदर आपने क्या लिखा है? 5 6 8 आपने लिखा. समझ आ गई. अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को. ठीक है, हम क्या करेंगे? वी गो हियर. नाउ रिमेंबर, ये दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका रिजल्ट किस तरह से होना चाहिए. So let me do that again. पहला मैट्रिक्स है 2 by 3 का, 2 rows and 3 columns. दूसरा मैट्रिक्स है 3 by 1. जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है, जो आपका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, that is going to be these two, 2 by 1, 2 by 1. ये आपका रिजल्ट होगा. सो इसका पता है रिजल्ट क्या होना चाहिए? 2 रोज होनी चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए. ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा. अच्छा, यानी कि दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा. अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम दिस. अच्छा, जो आपके पास इस ये एरो हमने लगा दिया यहाँ पे, जो एरो के टेल है लेफ्ट साइड के ऊपर, उसको आपने राइट साइड पे जो एरो हमने वहां पे वर्टिकल लगाया है, उसकी टेल से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, राइट? सो व्हाट डज दैट गिव अस? 10 into 5, that is 50, plus 25 into 6, that is going to be 150. It is 10 into 5 is 50, plus 25 into 6, that's 150, plus 30 into 8, right? 30 into 8, what is that? That's 240. ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर ये वैल्यू है. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? We look at the second row here. Second row में उसी तरह से, वहां पे तो एक ही कॉलम है. Go here. 20 into 5, this 20 into this 5. 20 into 5 क्या आएगा? 100. ये सेकंड रो के अंदर आ गया. 40 into 6 plus 40 into 6. 40 into 6 क्या होता है? 40 into 6 is 240, plus 25 into 8, that's going to be 200. ठीक है, यहाँ से आपके 200. That's going to be 200 plus 240, that's 440, and then you have 100 plus 240 plus 200, that is 540. Is that okay? This is your matrix, 440 and 5.
Any issues with this? Any issues with this? No, sir. Okay, good. Achha, now in the last part it says explain what the elements in matrix P represent. We've got these two elements. What do they represent now? 440 का represent कर रहा है, 540 का represent कर रहा है. अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो क्या रही है. हमने क्या किया, मेन वाले सारे पहले मल्टीप्लाई किए. देखिए पहली रो क्या है, ये हमारे पास मेल्स की प्राइसेस है, मेल्स के नंबर है, नंबर of small sizes and medium sizes and large sizes for men. ये हमारे पास पहली रो men को represent कर रही थी. men को हमने multiply किया इनकी prices के साथ, हमारे पास ये 440 नंबर आ गया. पहला जो 440 नंबर है ये हमारे पास men को correspond कर रहा है. This is the total sales to men, right? So males की dollar sales आ रही है आपके पास. आपके पास total sales figures कितनी थी for males? That's 440. 540 का represent कर रहा है. It represents the same thing for females. 540 क्या है? क्योंकि 540 कहाँ से आ रहा था? 540 के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों numbers को जो females को represent कर रहे हैं, उनको हमने multiply किया इनके ये prices के साथ. वुमेन्स की Sorry? चलिए टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स की थी. Exactly. So what we have is we have the total sales, या फिर amount आप कह लें उसको, the amount, or it's better to write dollar amount, the dollar amount from males or from men and from women. You have the numbers mentioned. Men के क्या correspond कर रहा है? That's 440. And females को क्या correspond कर रहा है? That's 540. नीचे वाली रो जो है, क्योंकि आप बस रिजल्ट के अंदर यहाँ पे क्या था, पहली रो रिप्रेजेंट करी थी मेल्स को, राइट. हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल वाले को 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल की टोटल अमाउंट आ गई, राइट. 10 आपके पास टी शर्ट्स हैं और $5 जो है वो हर टी शर्ट का है, तो 10 into 50 इसलिए करते हैं, हमारे पास ये 50 नंबर आता है. सिमिलरली मीडियम की प्राइस को उससे मल्टीप्लाई किया नंबर से, और हमने लार्ज की प्राइस को उससे मल्टीप्लाई किया, लार्ज के नंबर को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया, इन सबको टोटल करेंगे 440 आता है. दैट रिप्रेजेंट्स total sales to males. Similarly for females. So that's what this means here. Achha. Now the shopkeeper sells all sizes of men's t-shirts at $10 each. Okay. He sells all sizes of women's t-shirts at $9.5 each. अच्छा, ऊपर जो information थी वो हमारे पास कहाँ पे थी? Anya sells all of, अच्छा, so Anya is selling these t-shirts to a shop, right? Shop जो है वो आनिया से खरीद रही है इन prices के ऊपर. $440 को टोटल पे किया मेल्स के ऊपर, और फीमेल्स के लिए 540 उसको 540 के ऊपर उसने जो है वो बेचे हैं टोटल. अच्छा, now the shopkeeper sells, अब वो shopkeeper आगे बेच रहा है किसी को, right? The shopkeeper sells all sizes of men's t-shirts at $10 each. Right, so now shopkeeper does not care कि वो size क्या है, सबकी price same है, और women's t-shirt की सारी की prices क्या रखी हुई हैं उसने $9.5. Okay, sells all of these t-shirts. उसने सारी t-shirts बेचनी है, सारी बिक गई हैं, ठीक है. अच्छा, now सबसे पहले तो कहते हैं work out this, work out 10 and 10 9.5. ये बस एक matrix है, इसको अपने multiply करना है इस matrix से. Again, I would recommend, it would help you to understand कि final matrix आपका किस तरह का बनेगा. This is one row, पहला matrix, it's one row and 2 columns, है ना. पहला matrix के अंदर 1 row and 2 columns है, दूसरे के अंदर you've got 2 rows and 3 columns. तो जब आपका final matrix आएगा ना, वो इस तरह का होएगा 1/3. ये आपका final matrix आना है 1/3 का. 1/3 का क्या मतलब है? एक ही रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे, तो लंबा मैट्रिक्स होगा हॉरिजॉन्टल इस तरह का, ठीक है. एक ही रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे. अच्छा, now how do you multiply? Again,
10 को 9.10 और 9.5 but this here ये पहली कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। अच्छा, so 10 into 10, this 10 into this 10, what does that give us? That is 100 plus 9.5 into 20. What is that? 20 into 9.5, that's 190. So 100 plus 190. अच्छा, उसके बाद अब दूसरी कॉलम में आ गए यहाँ पे 10 into 25, that is 250. That's 250 plus, अब रिमेंबर इसका क्या ऑर्डर है? 1/3. एक रो है और 3 कॉलम्स है। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक और कॉलम आ रहा है। 250 plus 9.5 into 40. 9.5 into 40 क्या होता है? That's going to be 380, right? Yeah. Achha. Then you have the third column, 10 into 30. What's that? That is 300. Plus 9.5 into 25. 9.5 into 25. That is 237.5. So 237.5. ठीक है? That's our complete matrix. इसका आप total कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे. Your result is 290. Then you have 250 plus 380. It's better to just do it using a calculator because आपको तो paper 2 है sir, so don't have to worry about doing it mentally. 630, then 300 plus 237.5, that is 537.5. That is the matrix that you get here. Okay. Now again, यहाँ पे ये represent क्या कर रहा है? ये क्या represent कर रहा है? यहाँ आप देखें original matrix क्या था, इसमें क्या आपको क्या क्या चीजें थी? पहली रो मेल्स को रिप्रेजेंट करी थी, दूसरी रो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करी थी। ये स्मॉल साइजेस, मीडियम एंड लार्ज कॉलम्स आपके साइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज आपकी मेल और फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? 10 वो प्राइस चार्ज कर रहा था किसकी? मेल्स की, राइट? मेल्स को 10 चार्ज कर रहा था और फीमेल्स को 9.5 चार्ज कर रहा था, राइट? तो आपके पास ये क्या आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि 3 कॉलम्स आए हैं, कॉलम्स के अंदर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हुआ था? स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है ना यहाँ पे, this is the amount that the shopkeeper is getting for the small shirts, for the medium shirts and for the large shirts. ये उसके पास ये अमाउंट्स आ रही हैं टोटल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो कहता है, अगर आपसे उसने पूछा होता, this is what you would say, this is the amounts that the shopkeeper is getting for small, medium and the large t-shirts. ये चीज represent कर रहे हैं यहाँ पे. Then it says work out the percentage profit the shopkeeper makes when he sells all of these t-shirts. अच्छा, अब उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही? उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? उसकी कॉस्ट कितनी थी शॉपकीपर की? वो इस कॉस्ट पे खरीद रहा था आनिया से 440 मेल्स की और 540 की फीमेल की। टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी? टोटल कॉस्ट उसकी थी 440 plus 540, and that gives us 980. That was the total cost that he was paying to Anya. What is his selling price in total? फिर आप यहाँ पे फिर दें। Yeah, so total sales कितनी है? You have these three amounts, 290, 630, 537.5. तो टोटल उसके जो पैसे बन रहे हैं वो इन दोनों तीनों को ऐड करके आ जाएंगे। 290 plus 630 plus 537.5, and that will give you some number. That's 290 plus 630 plus 537.5, and that is 1457.5. Okay, अब आपको क्या करना है? Percentage profit निकालना है, percentage profit that this guy is making. Okay, percentage profit किस तरह से आएगा? So remember, percentage profit का मतलब Increase your original.
Sorry, increase over original increase into over original. Yes, you can do it like that. So percentage profit. So आप क्या कर सकते हो, आप वही वाला formula new minus old, that's basically going to give you increase, divide by the original, that's the old, that's into 100%, right? Percentage change का जो formula है वो अब यहीं पे उसी तरह से apply कर सकते हो profit केस के अंदर. आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, you will have total sales कितनी थी, यहाँ पे essentially हो क्या रहा है, new का मतलब है we're talking about sales में से आप cost minus कर रहे हो, that gives you the increase, profit की amount आ गई, divide by the old यानी कि आप cost से divide कर रहे हो, original से divide करना होता है हमेशा. यहाँ पे क्या होएगा 1457.5 minus 980 divided by 980 multiplied by 100%, right? That will give you some number, that will be the percentage increase. Minus 980, तो ये आ रहा है 48.7. okay, so that's 48.72. 48.7%. So round 33. Now you can just write 48.7% and that's enough. Okay, 48.7%, that is your percentage profit. Okay, any problems in this question? Any issues with this question? no sir. Okay. All right, good. Let's move on. Question number 4. So you have this triangle A that is shown on the grid. The transformations are here. Got this triangle. Triangle A is mapped onto B by translation. So translation करनी है 7 minus 5 की. Draw and label triangle B on the grid. Okay, so आपने करना क्या है? Translation में, remember, nothing changes. Size भी आपका वही है, shape भी वही है, orientation भी वही है, सिर्फ आपकी figure shift हो जाती है, right? Shift किस तरह करनी है? 7 horizontal, right? 7 units right, 5 units down. 5 units down. अब क्या कर सकते हो? Just take any one point. For example, ये point ले लेते हैं जिसके ऊपर 90 degrees का angle बन रहा है. इसको देखते हैं 7 units right move कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's here. ठीक है? And then 5 units down. That's 1, 2, 3, 4, 5. वो point इधर आ जाएगा. ठीक है? वो point जो वहां पे मैंने मार्क किया था, that one is going to be here. अब यहाँ पे आपने उसी तरह की ट्रायंगल बना देनी है. 3 यूनिट ऊपर को जा रही है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है? तो हमारे पास एक ये आ गया इधर, ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन आ गई इधर, ठीक है? And then we have 1 unit here on this side. And we can complete this triangle like this. And that's our triangle. Okay, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं कोई, ट्रायंगल बी, उसने कहा लेबल उसको बी लिखना है इसका, सो दैट्स आवर ट्रायंगल बी. ये शिफ्ट किया है किस तरह से, सिर्फ एक पॉइंट कोई भी यूज कर ले, बाकी सारी फिगर्स के साथ ही मूव कर जाएगी ना. तो ये वाला पॉइंट अगर मूव किया 7 यूनिट्स राइट एंड देन 5 यूनिट्स डाउन, दैट्स गोइंग टू बी हियर. ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया और उसी तरह की फिगर यहाँ पे बना देनी है, एग्जैक्टली सेम साइज, 3 यूनिट्स वर्टिकल हाइट होनी चाहिए, 1 यूनिट ये होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी ड्रॉ देयर. ओके, अच्छा, तो बस नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है triangle A is now mapped onto C by an enlargement. अब enlargement का scale factor क्या है? -2 और center क्या है? -1 and 2. Okay, now where is the center? -1 and 2. Let's mark that. -1 and 2. This is the center. ये आपका center है enlargement का, और scale factor क्या है? -2. अच्छा, माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का मतलब होता है एक तो वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के दूसरी साइड पे चला जाएगा, और 2 का मतलब है कि उसका साइज डबल हो जाएगा, Twice. साइज का डबल हो जाएगा. अच्छा,
Now there are two ways of thinking about it. So if you're good at understanding these shapes graphically, the quickest is आप बस ग्राफ से देख लो कि ये shape किस तरह से बनेगी, right? So let's do it graphically first, then I'll tell you another method of doing this. That's using vectors. पहले ये हम निकाल लेते हैं. The other is much longer, but यहाँ पे हम क्या करेंगे enlargement में, आप देखें इस पॉइंट से आपने एक रूलर रखना है. आपने क्या करना है, एक रूलर रखना है. रूलर से आपने मेजर करना है जितना भी ये डिस्टेंस बन रहा है, तब ये डिस्टेंस बन रहा है उसके डबल आपने दूसरी साइड पे ले जाना है उसको. क्या आप रूलर रखोगे, उससे आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को ज्वाइन करोगे इस लाइन, इस पॉइंट के साथ. फॉर एग्जांपल इससे स्टार्ट करें, इस पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ज्वाइन करोगे, फिर इसको एक्सटेंड कर दोगे लाइन को 2 टाइम्स ऑन द अदर साइड. सो 1 and then 2. जो ये वाला पॉइंट है नीचे वाला, I were to call this point let's say x, this is y, this is मैं x कह देता हूँ, उसको मैं y कह देता हूँ, उसको मैं z कह देता हूँ. तो ये y पॉइंट कहाँ चला जाएगा, it's going to go right here. ये आपका y डैश बन गया. ठीक है, जितना इस साइड पे डिस्टेंस था उसके 2 टाइम्स दूसरी साइड के ऊपर डिस्टेंस. ओके, we do the same thing for x. रूलर रखा, रूलर रखेंगे, ये डिस्टेंस देगा. फिर आप इस तरह से भी रफली देख सकते हो, लेकिन 2 यूनिट्स राइट पे है ना इधर. दैट माइट बी इजियर फॉर यू टू थिंक अबाउट. 2 यूनिट्स लेफ्ट है, आपने 4 यूनिट्स राइट पे चले जाना है. 1 2 3 4 यूनिट्स राइट पे चले गए. अब ये 1 यूनिट नीचे था, आपने 2 यूनिट ऊपर चले जाना है. दैट्स गोइंग टू बी राइट हियर. ये आपके पास पॉइंट आ गया, दैट इज x डैश. x पॉइंट है वो इधर मूव कर जाएगा. अगेन लेट मी रिपीट, सेंटर से आप x पे कैसे जाते हो, 2 यूनिट्स लेफ्ट 1 यूनिट डाउन. x बार कैसे होएगा, 2 के बजाय 4 यूनिट्स उधर चले गए, स्केल फैक्टर के अंदर 2 आ रहा है, और 1 नीचे के बजाय 2 ऊपर चले गए. दैट्स योर x डैश. इसी तरह z, ये आपका z है, इससे डबल आपको दूसरी साइड पे जाना है, राइट. अगेन वन वे इज 2 यूनिट्स लेफ्ट पे जा रहे हो इधर, आप 4 यूनिट्स राइट पे चले जाओ, उसका डबल. दैट्स गोइंग टू बी हियर. ये 4 यूनिट्स राइट हो गया, और फिर 2 यूनिट्स ऊपर है, आप 4 यूनिट्स नीचे चले जाओ, 1 2 3 4. दैट्स गोइंग टू बी हियर. दिस इज योर पॉइंट c dash. So your enlarged figure is going to look like this. It's going to look like this. So the figure आएगी this xc, xy here, and you have yz here. This is your enlarged figure. हम label कर देंगे कुछ. This is our figure C with this center of enlargement. ठीक है? If you're good at doing it graphically, you should do that because that will be quicker. Okay? अच्छा, एक और तरीका इसका क्या हो सकता है? That's mechanical. आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, but that will ensure कि आपके कोई mistake नहीं होती. अच्छा, उसका क्या तरीका है? This is your center. ये आपका center है. Center है ना आपका ये. आपने क्या करना है? तो हमने mentally सोचा है यहाँ पे, अच्छा 2 यूनिट ऊपर है, इधर लेफ्ट में है, 2 यूनिट, आपको 4 यूनिट राइट पे जाना है, वो आपने लिख के कर लेना. तो बेसिकली क्या होएगा, सेंटर से आप x पे कैसे पहुंच सकते हो. So let's talk about x, let's talk about y, and let's talk about z. Okay, सेंटर से x पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है. सेंटर से x पे पहुंचने के लिए you have to go 2 units left, 1 2 left, and आप लिख दोगे -2. You have to go 1 unit down, again क्योंकि नीचे को जा रहे हैं, you write x के लिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन से नहीं, जो भी आपका सेंटर होगा उससे आपको 1 यूनिट नीचे जाना है. That's your x. That's how you reach x from the center of enlargement. अच्छा, इसी तरह से how do you reach y? 1 unit left and 1 unit down. You say this is -1 and -1. How do you reach z? 2 units left. That's -2. 2 units up. That is 2. ये कह रहे सबको हमें वेक्टर्स कैसे लिखें? Is this clear? How we write these vectors? Yes, सर फिर बाद में इनको सबसे -2 से मल्टीप्लाई करे जाएंगे.
Exactly. So whatever is your scale factor now, scale factor kya hai? Scale factor is -2. Okay, that's your scale factor. Just multiply everything by -2, -2, -2, -2. जो भी आपका scale factor होएगा, उससे आपने multiply कर देना है. आपको results आ जाएंगे. ठीक है? So from here you get 4 and 2. You get 2 and you get 4 and -4. अब ये उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सेंटर से वो आप देखें वो क्या है. फॉर एग्जांपल अब जो मेंटली कर रहे थे ना वो हमने बस लिख के कर लिया, राइट. सो इफ यू गुड एट डूइंग इट मेंटली जस्ट डू इट, राइट. अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. और अब इसको इस तरह से कर सकते हो. क्या मतलब है, एक्स पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 4 यूनिट्स राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. सो सेंटर से आप काउंट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 एंड देन 2 यूनिट्स अप. दैट्स दिस पॉइंट एक्स बार, x dash. ठीक है. इस तरह y कैसे आएगा, सेंटर से 2 यूनिट्स राइट 2 यूनिट्स अप. सो 1 2 राइट एंड देन 2 यूनिट्स अप. दैट्स दिस y bar. अगेन z कैसे आएगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4 यूनिट्स राइट 1 2 3 4 एंड देन 4 यूनिट्स डाउन. दैट्स 1 2 3 4. दैट्स दिस पॉइंट z dash. अब इसको इस तरह से लिख के कर सकते हो. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से आपने वेक्टर्स बनाने हैं और बस स्केल फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देना. Okay, is this clear to everyone? Yes. Okay, let's look at the next part. Good. The triangle P is shown on the grid. So you have another triangle here. That's triangle P. The stretch S. So we can ignore this. It's not part of the syllabus anymore. Stretch ki baat ho rahi hai. It's not part of syllabus. We will ignore this. Describe fully the stretch S. You don't have to worry about that. Okay. Then so that's it. Transformations के अंदर हमारा इतना ही part था यहाँ पे इस paper के अंदर. Let's move on. अच्छा, now this is a fairly straightforward question. कि हम जल्दी से करेंगे. Express as a single fraction in its simplest form. ये जो expression है. So all we have to do is just multiply the denominators x minus 2 into x plus 1. Sorry. मुझे सॉरी आवाज नहीं आ रही है. अलीशा आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि जो स्ट्रेच वाला पार्ट था ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ये सिलेबस से निकल गया हुआ है. ठीक है. So you don't have to know this. Okay. ठीक है. ओके सर. अगर आपको ये करना भी होता आप इसको कर सकते हो. ये वाला पार्ट तो आप कर सकते हो. मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको. अगर स्ट्रेच का नहीं भी पता आप बस वो मैट्रिक्स यूज करके ओके सर आप कर सकते हो. Right, but that's not part of syllabus, so we don't worry about that. Okay. So 4 into x plus 1 minus 5 into x minus 2. इसको simplify कर लेते हैं. ठीक है. This gives us 4x plus 4 minus 5x plus 10 divided by x minus 2 into x plus 1, and this gives us minus x plus 14 divided by that. अच्छा, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट तक हम इसको इसी फॉर्म में रखते हैं ताकि अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कर लें. लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, हम डिनोमिनेटर को भी अब एक्सपैंड कर लेंगे. ठीक है. डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर लेते हैं. दैट गिव्स अस x स्क्वायर, बिकॉज़ सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर देने ना तो ये आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म है डिनोमिनेटर के अंदर. तो ऑल्सो सिंपलीफाई दिस. x square minus 2x plus x minus 2. So your final result is going to be minus x plus 14 divided by x square minus x minus 2. ठीक है. This is what we get here. Now let's move on. So you have to solve this. So that's straightforward. 2x square plus 2x, that's equal to 12 minus 3x. Take everything to the left side. We get 2x square plus 5x minus 12 equals 0. So we can see if factorization is possible. 12 और 2 को multiply किया, what do we get? We get 24. और यहाँ पे negative sign है.
तो 24 के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको माइनस करके हमें 5 मिल जाए, राइट? तो हम चेक कर लेते हैं 2 और 12 नहीं, 3 और 8 yes, so 3 and 8 they work. We say this is going to be 2x squared plus 8x minus 3x minus 12 equals 0. 2x common liya, x plus 8 minus 3 sorry, x plus 4 tha 3 into x plus 4. You'll realize here if they are both the same, that means you've done it right. That's 2x minus 3 into x plus 4 equals 0. So either 2x minus 3 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. X is equal to 3 over 2 or x is equal to minus 4. So you write 3 over 2 here or minus 4 here. Right? So that was just a quadratic equation. This mein aapko factorization apply karke you could solve that. Okay, let's move on. Anil and Yasmin buy some pens and notebooks from the same shop. Okay, so now they're buying some pens and notebooks. Anil buys 3 pens and 2 notebooks. The total is $4.8. Yasmin buys 5 pens and 4 notebooks for $9. Form a pair of simultaneous equations to represent this information. Okay. How do you form simultaneous equation? Simultaneous equation के अंदर हमारे पास 2 variables होंगे. अब 2 variables कौन से होंगे? हमारे पास हमें पता है कि 3 pens हैं और 2 notebooks हैं, ये तो हमें पता है. Total amount भी पता है, that's 4.8. What is unknown? The unknown is कि pen का कितना price है? Price of pen, we don't know that. So pen की price वो हमें नहीं पता, right? Price of pen, that is unknown. Let's call that x. या तो हम x ही कह देते हैं. Let's call that x. Price of notebook, one notebook की बात करें, एक notebook की price, let's call that y. ठीक है, इसका क्या मतलब है? 3 pens लिए तो pens की total cost कितनी होगी अनिल के लिए? It's 3 times x, right? अच्छा, 2 notebooks ली, दोनों की cost total कितनी होगी? That's 2 into y, that's the price of one notebook. That should equal 4.8. ठीक है? अच्छा, then Yasmin, she buys 5 pens. Pens की total cost कितनी होगी? 5 into x, and 4 notebooks, that's 4y. इन सबको add किया, हमारे पास जो total आया यहाँ पे, that is 9. These are 2 simultaneous equations that we could form here. Yeah, x y की जगह p और n भी use कर सकते हैं. That's perfectly okay. So what कहता है, solve these simultaneous equations to find the cost of a pen and the cost of a notebook. तो x और y की values figure out करनी है. So let's do that. We just solve them simultaneously. आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? You can just multiply the first equation. इसको आप multiply करते हैं 2 के साथ, ताकि आपकी elimination हो सके. I sometimes prefer that. So 3x plus 2y, that's equal to 4.8. Sorry, 2 से multiply करना था इसको. That is 6x plus 4y. 4.8 into 2, what is that? That is 9.6. ठीक है? अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन में क्या आ गया? You got 5x plus 4y, that's equal to 9. We change the signs. इसको minus कर दिया. This gets cancelled. I'm left with x equal to 0.6. तो directly आ गया x की value. और फिर y की value निकालने के लिए I can input that into any of the 2 equations. I can say 5 into 0.6 plus 4y is equal to 9. So 4y is equal to 9 minus 5 into 0.6. That is going to be 6, और y हमारे पास आ जाएगा 1.5. So price of pen कितनी होगी? X क्या था? X हमने price of pen ली थी, right? X was the price of pen or the cost of pen. That is $0.6, and for a notebook, this is 1.5. That is what we get. Okay, any issues with this? Any questions? No, sir. Is this clear? Okay, good.
Now, can we do a couple of more questions? What do you think? No. सर आपकी मर्जी है Sorry? सर आपकी मर्जी Okay, just give me one. Okay, just give me 1 minute, and I think we can do a couple of more questions then. So I'll be back in a minute. अब और 2 questions और कर लेते हैं. सर 10 मिनट ब्रेक Sorry? सर 10 मिनट्स की ब्रेक दे दें फिर 12 देते हैं नहीं, 10 minutes will be too much because I need क्या to wrap it up early. 1 minute मुझे बस दें. I just need to check something. अपना उसको continue करते हैं. We'll do 2 more questions ताकि हम फिर अगले 2 sessions के अंदर 2 और papers कर सकें. अच्छा, क्या देख लें? ओके ये क्वेश्चन आप देख लें. Try to think about this. We will just do it in a minute. All right, so let's think about this now. Okay, so we have the sets question then. So we have the universal set given, in which we are given that x is an integer and x is between 10 and 20, right? 10 and 20 के दरम्यान में कोई number है. We have set a, x is an odd number. यहाँ पे it's better to just write it down. जो numbers हमारे पास आते हैं 11, 13, 15, 17 and 19. ठीक है, universal set के अंदर से ये numbers हमारे पास हो सकते हैं. Multiples of 5, you've got 10, you've got 15 and you've got 20, right? 10 and 20 both are included. Of course, equality के signs भी हैं यहाँ पे. Both 10 and 20 are included there. So now it says find n of a intersection b. उसने a intersection b नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा है n of a intersection b, यानी a intersection b के अंदर कितने elements हैं, कितने common elements है a और b के दरम्यान में. So let's figure that out. That's just 15 here. There's only one common element. We can say it's only one, right? So 15 common है. 15 नहीं लिखना है यहाँ पे, right? यहाँ पे आपने 1 लिखना है because it's asking about the number of elements in A intersection B. Okay, so that's 1. There's only one element that is common. अच्छा, तो अब वो कहते हैं find A complement union B. A complement union B. How do you think about this? A complement यूनियन बी. यूनियन का वर्ड जब भी आता है उसका मतलब ये होता है हमने कंबाइन कर देना है. वी कंबाइन या फिर मर्ज, उनको हमने मर्ज कर देना आपस में. किन को? इन दोनों सेट्स को. ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वी हैव एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ ए. ए क्या था? ऑड नंबर. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल इवन नंबर्स. वी गॉट 10, 12, 14, 16, 18, 20. दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. बी क्या है? बी आपको नजर आ रहा है वहां पे. दैट इज 10, 15 एंड 20. इन दोनों सेट्स का यूनियन, राइट? इन दोनों का यूनियन, इनको कंबाइन कर देना है. तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर? यू गेट 10, 12, 14. अब इवन नंबर्स के साथ साथ ये 15 भी आपके पास ऐड हो गया. दैट्स 15, 16, 18. ये 15 की नहीं समझ आ रही. 15 क्यों ऐड हो गया? क्योंकि यूनियन है ना. यूनियन का मतलब आपने उनको कंबाइन कर देना है. जितने भी एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट के आ रहे थे, आपने बेसिकली पता क्या किया है? आपने इन सबको लिख दिया. ये सारे आपका उसके अंदर आ गए. बस रिपीटेशंस को इम्प्रूव करना, रिपीट नहीं करने. 10 को 2 दफा नहीं लिखना, 20 को 2 दफा नहीं लिखना. बस कंबाइन कर दिया सबको और रिपीटेशंस खत्म कर दी, राइट? कम से कम एक दफा भी आ रहे कहीं पे, वो इंक्लूडेड होगा. रिमेंबर, इट्स यूनियन, इट्स नॉट इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन तो इनमें सिर्फ 10 और 20 होता है. अगर इंटरसेक्शन की बात होती, दैट वुड बी 10 and 20.
इंटरसेक्शन नहीं है ये इन दोनों को कंबाइन कर देना. ओके सो इवन दो 15 इज अ पार्ट ऑफ ए, 15 ए के अंदर आ रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे उस वजह से नहीं आया ये 15 आया है क्योंकि वो बी का पार्ट था. क्योंकि वो बी का पार्ट है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now a number r is chosen at random from the universal set. तो आपको यूनिवर्सल सेट था ऊपर, उसमें से एक नंबर हमने randomly चूज किया है. Find the probability that r belongs to, how do you read this? R belongs to, मतलब belongs to, r is part of this set, right? R is an element of A union B. क्या probability कि वो A union B का part होएगा? अच्छा A union B का हमारे पास हमने यहाँ पे नहीं है कहीं पे रखा हुआ, तो let's find A union B. A union B क्या होएगा? That's just combination of A and B. A और B को combine कर दें. So that's 11, 10, 11, 13, 15, 17, 19 and 20. Right? ये हमने A और B को combine कर दिया. This is A union B. ठीक है? अब उसने क्या पूछा है? ये जो यूनिवर्सल सेट था इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के अंदर? Any idea? How many elements do you have in this universal set? So इसके अंदर 10 है, number of elements. Okay, good Manahil. Is this 10? Think again. देखिए 10 भी included है, 20 भी included है. 10 से लेकर 20 तक there are 11 numbers in total. 11 आएंगे. Right? So total 11 numbers हैं. There are total 11 numbers. 11 में से क्या probability है कि जब आपने randomly कोई choose किया वो इस सेट का पार्ट हो? इस सेट के अंदर उसमें से कितने नंबर्स हैं? 7. These are 7. तो क्या probability कि उन 11 में से आपने एक नंबर चूज किया तो वो इस 7 का पार्ट होएगा? That's 7 over 11. Very good. So that's going to be 7 over 11. This probability is 7 over 11. Okay? Yes. All right. Let's move on. Now, in a survey, 40 people were asked what they had read that day. A total of 10 people had read a book. A total of 24 people had read a newspaper. And 14 people had read neither a book nor a newspaper. अच्छा देखें 40 total लोग थे. You see here 10, 24 and 14 इनका total is more than 40. Right? That means कोई intersections होंगे इसकी वजह से total आपका 40 से ऊपर जा रहा है. अच्छा सबसे पहले वो क्या कहता है? By drawing a Venn diagram or otherwise find the number of people who had read both a book and a newspaper. Both a book and newspaper. अच्छा दो types of लोग हैं हमारे पास. कुछ वो हैं जो books पढ़ते हैं, कुछ वो हैं जो newspaper पढ़ते हैं, कुछ वो हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते. Let's draw that. दो सेट बनेंगे, right? एक book वाला सेट होएगा, एक newspaper वाला सेट होएगा. So let's draw that here. इसको हम draw कर लेते हैं. So we have this universal set. Okay. And inside that universal set, we've got two sets like this. We've got one set here. And we have another one here. Okay, so this is the situation, okay? Sorry, something happened to that. I'll just make another one. Okay, so these are the two sets that we have. So let's call this the set B. Let's call this the set N, the newspaper one. अच्छा जब भी आप इस तरह की Venn diagram बनाते हो ना, what you should start with is the region that is right in the middle. या तो common part से start करें सबसे पहले,
ठीक है, या बाहर वाले पार्ट से स्टार्ट करें जो सबसे बाहर है, ठीक है। अच्छा, सबसे बाहर वाला पार्ट तो बहुत काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 14 people had read neither a book nor a newspaper. You have to be sure कि अच्छा वो नंबर हम जो लिख रहे हैं वो उस सेट के अंदर का टोटल नंबर है। फॉर एग्जांपल 14 की बात हो रही है ना, यहाँ पे 14 people had read neither a book nor a newspaper. उन्होंने बुक भी नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी, वो कौन सा रीजन हो सकता है? दैट्स आउटसाइड रीजन। तो बाहर 14 है, दैट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फिगर आउट। बाहर हमने 14 लिख दिया सबसे पहले। अच्छा, अब जो बाकी दोनों नंबर्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब देखिए 10 people had read a book, 10 लोगों ने बुक पढ़ी। अब बुक के अंदर वी गॉट टू सेट्स, मतलब टू रीजन्स, एक ये वाला रीजन है, एक हमारे पास ये वाला रीजन है। इन दोनों का टोटल आपके पास क्या होगा? इन दोनों का टोटल 10 होगा। तो ये 10 नंबर को हम यहाँ पे कहीं लिख नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये 24 है, इस 24 को हम न्यूज़पेपर वाला पार्ट ये भी है और ये बाय वाला पार्ट भी है। Which one do we write 24 in? इसलिए हम इन नंबर्स को पहले नहीं लिख सकते। आपने क्या करना है, कॉमन पार्ट से स्टार्ट करना है, जो कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन तो आपको पता ही नहीं है, ये दरम्यान वाला पार्ट जो है ये हमें पता है क्या? ये हमें नहीं पता। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेंगे कोई चीज। लेट्स कॉल दिस x, लेट्स कॉल दिस x। अच्छा, नाउ इफ दिस इज x, टोटल लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो कितने, जो बुक्स पढ़ी उस दिन how many are there? They are 10 people. 10 people had read a book that day. अब इस ये जो B सेट है, ये जो B वाला सर्कल है, इसके अंदर जो टोटल नंबर होना चाहिए that should be 10. अगर ये x है तो बाहर कितना बचा? That's going to be 10 minus x. Similarly, ये न्यूज़पेपर वाला सेट है, न्यूज़पेपर वाला सर्कल है, इसके अंदर टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 24. अगर हमने इसको x कह दिया, what is left outside? That is 24 minus x. Now once you have drawn this, now it's fairly straightforward. 4 regions थे आपके पास उस फिगर के अंदर, चारों के अंदर हम numbers लिख लिए। Total number of people is 40. We just make an equation. We say 10 minus x plus 24 minus x plus 14. Just add everything up here. That should equal 40. ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा वो रिजल्ट। So it's going to be 10, 24 and 14. That is 48 minus x equals 40. x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48 minus 40, that is 8. ये जो कॉमन पार्ट है हमारे पास वो 8 आता है। ठीक है, ये कह रहे हैं सबको। I would recommend that you draw a Venn diagram for this। का डायरेक्ट तरीका होता है जिसमें आप essentially क्या करते हो, ये जो इन सब नंबर्स को ऐड करते हो, इनमें से आप ये जो टोटल नंबर है उसको माइनस कर देते हो, तो यू गेट दिस नंबर, राइट। लेकिन कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे ना इट डजंट वर्क। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, दैट यू नो कि अच्छा ये रीजन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेन डायग्राम के ऊपर, एंड दैट विल हेल्प यू actually do the rest of the questions, rest of the parts here as well, or if some questions have a different pattern, आप उसको फिर figure out कर सकोगे, right? तो I would recommend that you do it using this method. Is this clear to everyone? Is there an issue? Any problems with this? So once you draw that Venn diagram, you just add all those numbers up and equate that to 40. Okay. Achha, let's move on. Now, 2 of the people who had read a book are selected at random. अच्छा, किन लोगों की बात हो रही है? जिन लोगों ने बुक पढ़ी, सिर्फ उनकी बात हो रही है, राइट? जो 10 लोग थे जिन्होंने बुक पढ़ी, उनमें से आपने दो को सेलेक्ट किया रैंडमली। Work out the probability that they had both read a book and newspaper. अच्छा, now let me just copy that Venn diagram here. Venn diagram को यहाँ पे कॉपी कर लो, बस ऊपर है। Just copy that here. Paste that here. Right. ये हमारे पास Venn diagram थी। हमारे पास x के हमारे पास वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन नंबर्स को। हमारे पास एसेंशियली है क्या, x दरम्यान में मिडिल वाला पार्ट कितना था? 8। अगर ये 8 है, ये पार्ट कितना होगा? 2, और ये राइट हैंड पार्ट कितना होगा? 24 minus 8, that is 16। ये हमारे पास Venn diagram, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो बुक वाले लोग हैं जिन्होंने बुक पढ़ी, इनमें से 2 people were selected at random।
You have to calculate the probability that they had read both a book and a newspaper. ये तो मैं पता है कि इसी सर्कल के अंदर से है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों लोगों ने बुक के साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ा, यानी कि वो इस 8 के अंदर से थे, जो कॉमन वाला पार्ट है वो इसमें से। अब मैं पहली दफा सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई वुड गेट अ पर्सन हु हैड रेड बोथ अ बुक एंड अ न्यूज़पेपर? टोटल 10 लोग थे, उनमें से कितने लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ा हुआ था? 8। वी हैव 8/10, दैट्स फॉर द फर्स्ट पर्सन। दूसरी दफा क्या होएगा? इन 8 में से मैंने एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। How many am I left with from this region? 7. और टोटल कितने रह गए? टोटल भी 9, टोटल भी एक काम हो गया, that's 7/9. So पहला बंदा जो था उसकी इन 8 में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/10. सेकंड बंदे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? That's 7/9. So the probability that both of these two people had read a book and a newspaper, वो क्या होगी? First की probability and the second probability, we multiply both of them, that's going to be our result. Okay, so 8/10 into 7 divided by 9, that turns out to be 28/45. 28/45, that is the probability. Is this okay? Yes sir. So slightly tricky. Sir, Wording उस तरह की है। सर हम ये क्यों ले रहे हैं सर? इस वाले बुक वाले सेट को क्यों ले रहे हैं? हम न्यूज़पेपर वाले को भी तो ले सकते हैं। उसने क्या कहा आपको? उसने कहा 2 of the 10 people who had read a book, उन्हीं लोगों में से आपने 2 लोग सेलेक्ट किए हैं, इन लोगों में से, इन 10 लोगों में से जो ये बुक वाले सेट के अंदर आ रहे हैं। हम बात ही सिर्फ उनकी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में से आपने सेलेक्ट किए हैं, टोटल आपके हैं ही 10, उन्हीं में से आपने कोई सेलेक्ट करना। ओके, हाँ ठीक है, चलो ओके। all right, so yeah, we were here. Okay, so we're done with this. Let's look at this one and let's make it the last one for today. So the variables x and y are connected by the equation y equals 3 plus x minus x squared over 2. It's a quadratic equation. Some corresponding values of x and y on the table below. आपने टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले -3 इनपुट करके देखने क्या आता है। -3 इनपुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4.9 4.5 -4.5। 5 इनपुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 plus 5 -25 divided by 2, that's also -4.5. Okay, now let's draw that curve, -3 and -4.5। अच्छा, उसने यहाँ पे आपको स्केल नहीं दिया हुआ, राइट? ये आपको, अच्छा उसने खुद से आपको वहां पे वैल्यूज लिखी नहीं हुई, तो आपको वैल्यूज भी लिखनी पड़ेंगी। You have to use the scale that is given, 2 centimeter to 1 unit on the horizontal axis and 1 centimeter to 1 unit on the vertical axis. Now remember, आपके पास जो कैम्ब्रिज के अंदर ग्रिड होती है, this is 2 centimeters and this is 2 centimeters. ये तो पूरे 10 बॉक्सेस होते हैं, they are 2 centimeter. 5 बॉक्सेस का 1 centimeter होता है। ओके, तो उसको क्या करोगे? On the x axis, आपसे कहाँ, x axis कहाँ से कहाँ तक बनाया है? -3 से 5 तक, 2 centimeter to represent 1 unit. ओके, अच्छा -3 से स्टार्ट करते हैं। 2 centimeter to represent 1 unit, यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा, यहाँ -1 0 कहाँ तक करना है? 5 तक। 1 2 3 4 and then 5. Okay, so on the vertical axis you have to go from -5 to +5 and 1 centimeter represent 1 unit, right? अगर ये -5 है, ये हाफ में जाके 5 बॉक्सेस के बाद you got -4, you got -3 and so on. ठीक है, आप उसको ब्रेक भी दे सकते हो, you can say this -1, you have 1 here, 3 here and then 5 here. ठीक है, ये आपने -5 तक बनाना था, so you have these numbers here. This is going to be 0 1
3 and 4. ये आपके पास vertical axis में. Okay. Now draw the graph for this. ये आपने graph बनाना है. Just plot those values and join them with a smooth curve. -3 and -4.5. So you've got this point here. -2 and -1. -1 and 1.5. 0 and 3. 1, 3.5. 1 and 3.5. That's going to be here. 2 and 3. So इसके बाद वही उसी लेवल के ऊपर हम वैसे आ जाएंगे. 1.5 वही वाला है -1. 3 के ऊपर you've got 1.5. And 4 you've got -1. And 5 पे you again have -4.5. ठीक है, क्वाड्रेटिक कर्व है, सिमेट्रिक होती है ना, तो उसको ड्रॉ करेंगे. उस सिमेट्री उसी तरह आपके पास यहाँ पे भी बन रही होगी. Just draw that curve. You have to try and make it a bit smooth. So this is how it's going to look like. Okay, that's not very good. Okay, so this is what we have on the left side. Then we have some smaller on the right. Okay, I'm a bit particular about my curve. So yeah, so that's what it looks like. Okay, yeah, was smooth curve jo hai. This is how it's going to look like. Achha. Now, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at 3 and 1.5. 3 and 1.5 के ऊपर आपको tangent बनाना है. That's this point here. इस point के ऊपर आपको tangent बनाना है. आपने gradient figure out करना है इसका. अच्छा, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ. To figure out कि आपके पास gradient की value जो है, क्योंकि ग्राफ के अंदर ना सबसे ज्यादा जो inaccuracy आती है, अक्सर आपका आंसर जो रेंज से बाहर चला जाता है कभी-कभी, वो ज्यादातर gradient का ही होता है. ठीक है, उसको वेरीफाई करने का ना एक तरीका होता है. I'll do it very quickly. आपके पास ना ये वैल्यूज है ना, आपके पास कर्व क्या है, y equals 3 plus x minus x square over 2, right? Those of you who have done add maths to up to the differentiation से भी आप कर सकते हो, but there's another method as well. आपने किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट? 3 और 1.5 के ऊपर, है ना? 3 और 1.5 के ऊपर आपको टेंजेंट बनाना है. आपने अगर चेक करनी है ना, आपकी ग्रेडियंट की असल वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसके पास आपका, आप जब लाइन बनाओगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू किसके आसपास आनी चाहिए? आप पता क्या करो, एक पॉइंट ले लो जो 3 के बिल्कुल पास होए, 3 के बिल्कुल करीब, मतलब 3.01 फॉर इंस्टेंस. एक और पॉइंट ले लो 3.01. ठीक है, जस्ट x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट क्या होएगा उसका 3.01. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो फ्रॉम द कर्व. कर्व के अंदर वैल्यू इनपुट करो 3.01. So 3 plus 3.01 minus 3.01 का स्क्वायर divided by 2. ये मेरे पास आता है 1.47995. ठीक है, जो आपके पास x की वैल्यू है ना, उसके बिल्कुल करीब 3.01 फॉर इंस्टेंस, 0.01 के डिफरेंस पे एक और वैल्यू ले लो 3.01, उसको कर्व के अंदर इनपुट करो, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट आ जाएगी. तो इसका ग्रेडियंट होएगा ना, आपके टेंजेंट का ग्रेडियंट तकरीबन इतना होना चाहिए. इसका ग्रेडियंट आप फाइंड कर लें, क्या होएगा 1.5 minus 1.47995 divided by 3 minus 3.01. जब इसका ग्रेडियंट फाइंड करें, so 1.5 minus this divided by 1. So this is 2 point. देखिए बहुत accurate value आपको सही है, सारा 2.005. तो essentially आपको जो ग्रेडियंट की वैल्यू होनी चाहिए
टेंजेंट से जब निकालोगे वो 2 के आसपास होनी चाहिए, सॉरी -2 -2.05 -2। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है ना वो -2 के आसपास होगी। तो अब इसको टेंजेंट बनाओ तो वो -2 के ना आसपास कोई वैल्यू आनी चाहिए। उससे आप मार्केट स्कीम में भी देखोगे जो रेंज दी होगी ना उसमें -2 बिल्कुल मिडिल में आ रहा होगा, तो दैट्स योर एग्जैक्ट वैल्यू। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका टेंजेंट जो है वो ग्रेडियंट सही दे रहा है कि नहीं, राइट। सो दैट्स ऑफ कोर्स ओनली इफ यू हैव एनफ टाइम टू डू इट। आपने बाकी जो है वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके अपने एक्यूरेसी इंश्योर करनी है, बिकॉज ये मुझे भी बहुत मसला होता है टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, इट समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी इनएक्यूरेट। जस्ट वेरीफाई कि अच्छा वो डायरेक्शन आपने थोड़ी सी खराब तो नहीं कर दी वहां पे। तो दिस इज वन वे टू डू इट। अच्छा, सो लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट। हमने आपको बताया था किस तरह टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट बनाने का तरीका ये होगा, इस पॉइंट के आसपास आपने क्या करना है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करे, राइट। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए कर्व को, और उस जब ड्रॉ करें उस लाइन को तो दोनों साइड्स के ऊपर जो डिस्टेंस है कर्व से वो तकरीबन सेम होना चाहिए। अगर मैं इस तरह एक लाइन बनाऊं यहाँ पे, this is what our tangent looks like, let's say मैंने टेंजेंट बनाया, मेरे पास कुछ तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ऊपर वाली साइड पे थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा है कर्व और इस लाइन का, नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा कम आ रहा है, राइट। तो मैं रफली कोशिश करता हूँ कि इन डिस्टेंसेस को इक्वल रखें। तो नीचे वाले थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऊपर से हम थोड़ा सा उसके पास इस तरह कर लेते हैं। So this looks relatively better, right? So this is what I'm getting. Okay. अब आप क्या करोगे? You can just extend this line a bit if you want. Extend कर दें थोड़ा सा, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें। So this is what my tangent looks like. ठीक है, आप बस अपने ग्राफ पे देखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स लें टेंजेंट के ऊपर। Just make sure those 2 points are far away from each other. एक दूसरे से वो दूर होने चाहिए, पास नहीं लेने आपने पॉइंट्स, उससे ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, इनएक्यूरेसी आ जाती है अगर आप पास पॉइंट्स लेते हैं। सो टेक एनी 2 पॉइंट्स दैट आर इजियर टू रीड, राइट। कोई भी पॉइंट जो आपके लिए रीड करना आसान है। सो इफ आई विल टेक लेट्स से दिस पॉइंट, ऑलमोस्ट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, दिस इज 4 एंड -0.4. So again, be very careful while you're reading this. 0 से 2 units नीचे, yeah, so that's 0.4. 1 unit जो है 0.2 को represent कर रहा है. That's 4 and minus 0.4. Got 1 point here. एक पॉइंट ऊपर वाली साइड पे ले लें कोई, अगेन बहुत करीब नहीं लेना पहले पॉइंट से। तो 1 point that I could take could be, let's say this point here, approximately सी क्या वैल्यू बन रही है, this is 1 and 5.4, 1 and 5.4, ठीक है। इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें यहाँ से। Gradient is 5.4 minus 0.4, that's 0.4 plus 0.4 divided by 1 minus 4, and you can see what you get from this. So that's 5.8 divided by -3, that's -1.93 for me. ये मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है, राइट। आपको पता था अब एग्जैक्ट वैल्यूज की क्या है, -2 के करीब, so it's very close, it's going to be in your range, okay। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, then it says the points of intersection of the graph of this graph that you draw above, that you just drew above, and the line y equals k. अभी कोई लाइन है y equals k, अभी y equals something, remember इस तरह की लाइंस की शेप क्या होती है, it's a horizontal line. Y equals something, it's a horizontal line. Now the points of intersection of the graph of this and the line y equals k are the solutions of this equation. Remember हमने क्या कहा था, 2 ग्राफ्स हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, when these 2 equations are equal to each other. So essentially इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ना, वो अगर हमें थ्योरेटिकली फाइंड करने होते तो हम उसके लिए क्या करते हैं, we just equate these two, इनको simultaneously सॉल्व कर लेते हैं।
So we have y equals this 3 plus x minus x square over 2, and we've got y equals k. All we do is we just equate both of them. We say 3 plus x minus x square over 2, that should be equal to k. On points of intersection के ऊपर this is what it should look like. ठीक है, उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा है there are solutions to this equation. Now let's simplify what we have in our case, और उससे देखें हमारे पास क्या आता है. तो हमारे पास क्या आता है, उससे we get 3 minus k plus x minus x square over 2, that's equal to 0. अभी उस फॉर्म के अंदर नहीं आया. अब देखें x square का कोएफिशिएंट 1 है, -1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है. उस फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. We get 6 minus 2k, right? ताकि हमारी फ्रैक्शन में खत्म हो जाए. We get plus 2x and minus x square. हमने जब उन दोनों को इक्वेट किया उन इक्वेशंस को, we got this. उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन है. All we have to do now is just compare the two. We have 6 minus 2k plus 2x minus x square equals 0. अब देखें x minus x square है तो minus x square है नीचे, ये 2x है तो ये 2x है नीचे. कांस्टेंट क्या रह गया, उसके पास 10 था, हमारे पास क्या आ रहा है 6 minus 2k, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए. n equals 6 minus 2k, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. Right, so 2k is equal to -4, k is equal to -2. This value is going to be -2 here. Okay, does this make sense? यस सर हमने सबसे पहले ये किया ना कि मतलब वो जो हमारे ग्राफ की इक्वेशन थी उसको हमने लाइन से इक्वेट कर दिया, एंड देन Yes. हमने जा उससे कंपेयर किया. उससे कंपेयर किया. क्यों किया ये, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा था. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मतलब है, जहां पे वो दोनों ग्राफ्स की इक्वल वैल्यू हो. राइट, इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर उन दोनों की सेम वैल्यू, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है. जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, या तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो एक दूसरे के इक्वल है. इसलिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. सो y दोनों के अंदर सब्जेक्ट था, हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया, इस फॉर्म के अंदर लेकर आए जो उसने दी हुई थी कि फ्रैक्शंस नहीं है उसके अंदर कोई भी, उस फॉर्म के अंदर लेके आए, देन जस्ट कंपेयर द टू. कांस्टेंट हमारे पास 6 minus 2k था, उसके पास 10 था, just equate both of them and we get the value of k from there. Okay, is this fine? Yes, sir. Okay, now it says by drawing the line y equals k. अब y equals k का क्या मतलब है, k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई अब. So that's y equals -2. Find the solution of this equation. ये वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन की आपने सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, now again be careful, इसको आप कैलकुलेशन से कर दोगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अगर आप सॉल्व कर दोगे, that will not earn you marks. उस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. उसने आपको क्या कहा है, उसने आपको कहा है ग्राफ से आपने करना है. इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, you will not get marks for that. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो कि आपको उसके पास आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपने करना है इसको ग्राफ से. ही जब y equals -2 लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, we go on our graph, let's draw that line. Y equals -2, that line is going to be like this. -2 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं. That's this line here. एंड सर फिर जो ग्राफ को कट करेंगे फिर हम एक्स एक्सिस से देखेंगे तो वो हमारी वैल्यू होगी ना. बिल्कुल. सो ये लाइन है हमारी y equals -2. अब उसने क्या पूछा है, उसने आपसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा, उसने आपसे कहा इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है. इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ x आ रहा है, राइट, इसके अंदर y नहीं है. हमें सिर्फ x की वैल्यूज बतानी है जो हमारे पास आती है. x की वैल्यूज यहाँ पे क्या आती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर. वी गॉट वन वैल्यू हियर. ये देखेंगे ग्राफ पे क्या आता है. दिस फॉर मी इज -2.3. then I've got the other intersection point here. This on my graph is 4.3. ठीक है, so that's -2.3
and 4.3. Okay, this is what we get. Okay, so then it says this is a sketch of the graph of this y equals pa raised to power x, where a is greater than 0, a एक पॉजिटिव नंबर है और ये हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, राइट? x जो है पावर में आ रहा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं, आपको x जो है वो पावर में आता है. The graph passes through these points. 0, 4 से पास कर रहा है और 2 और 36 से पास कर रहा है. Now using this information, it asks us to find the value of p. Write down the value of p. Okay. अब देखिए हमारे पास क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं दो ग्राफ के ऊपर. एक ग्राफ है, उसकी इक्वेशन क्या है, that is y equals pa raised to power x. Right? This is the equation of the graph. Now it passes through these points. का मतलब है इसको satisfy करना चाहिए, right? वो जो इक्वेशन है आपके पास, ग्राफ की इक्वेशन है, that should satisfy these points. ठीक है, अब 0, 4 इसके अंदर इनपुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पर इनपुट करते हैं, y की वैल्यू 4 इनपुट करते हैं. What do we get? We get 4 equal to p into a raised to power 0. Any number raised to power 0 क्या होता है? 1 होता है. We get p equal to 4. Right? p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. That is what we write there. Right? p is equal to 4. So then it says find the value of a. अच्छा, जब p की वैल्यू आ गई हमारे पास, उसको इस तरह लिख सकते हैं, we have y equal to 4a raised to power x. Now we also have another value here. We have another point here, 236. ये भी तो ग्राफ के ऊपर लाई करता है ना, तो इसको इनपुट कर देते हैं. पहले हमने 0, 4 इसको इसलिए इनपुट किया क्योंकि इसके अंदर एक 0 था ना. That simplifies things for us. यहाँ पे देखें, इसने सिंप्लीफाई कर दिया कि a raised to power 0 हुआ, तो it does not matter कि a की वैल्यू जो भी थी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बस वो हमने उसके अंदर इनपुट किया और हमारे पास हो गया. सो जनरली एक्सपोनेंशियल के केस के अंदर ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो आपका y इंटरसेप्ट होता है ना, वो आपको से पास एक कांस्टेंट आ रहा होता है, जो साइड पे कांस्टेंट होता है. खैर, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. आप बस जो है यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट. आप बस ये पॉइंट इनपुट करें, बस वो वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, y equals 4a raised to power x. We have this equation now. p a raised to power x को हमने इसमें चेंज कर दिया because p की वैल्यू 4 है. हम use the other point. Let's input that. We have x equal to 2 and y equal to 36. So क्या मतलब है, जब 36 y है तो जो वो है हमारे पास x, that is 2. So 4a square is equal to 36. That's what we get. Okay, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी. So this is a square equal to 9. 36 over 4 9 आ गया. अब स्क्वायर रूट ले लिया. जनरली तो हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, राइट? हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन क्योंकि उसने आपने बताया हुआ है कि a पॉजिटिव है, a is greater than 0, इसलिए we only write the positive one. We don't have to write the negative one. हम कहते हैं a is plus 3, सॉरी, so स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा. जनरली हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं. यहाँ पे क्योंकि उसने बताया होगा कि हमें a पॉजिटिव है, इसलिए we only take the positive value. We have 3 here. A की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 in this case. Okay, let's do the last part. Now the graph passes through this point, 4 in q. Find the value of q. Again, अब बस वो ग्राफ तो आ गया ना. ग्राफ क्या है, y equals equation क्या है, y equals p a raised to power x था ना. That is now 4 into 3 raised to power x. ठीक है ना. 4 is p and a is 3. So y equals 4 into 3 raised to power x. This is our equation now. अब वो कहते हैं the graph passes through this point, 4 and q. q की वैल्यू फिगर आउट करो, यानी जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है. That's what you have to tell. So we just input that value. Y equals 4 into 3 raised to power 4. x की जगह 4 input कर दिया. 3 raised to power 4 is 81. So 4 into 81 आप देखें क्या आता है. This turns out to be 324. That's what you get there. Okay? Yes, sir. Yeah, so that's our question number 7. So that completes it. You're going to stop here. If you have any questions, let me know. Is this clear? Any confusions? Any confusion or anything? No, sir.
It's clear. Okay, good. So we will stop here then, and I'll see you again tomorrow, inshallah, around 4:15. कल noon पे class होएगी. Noon के ऊपर जो free group है, उसके ऊपर class है कल. So that's going to be on at around 4:15, and the topic is unconfirmed right now. I will let you know the exact topic क्या होएगा. लेकिन noon पे class होगी. Just remember that, so it's going to be there. Okay. So वो मुझे भी समझ गया था सर, मैंने जो क्रोम से जो साइन इन किया हुआ है ना सर, वो पेड वाले में किया हुआ है, और जो वैसे नून एकेडमी से हुआ हुआ है ना वो सर वो फ्री ग्रुप में हुआ हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जैसे भी है चलने देते हैं इसको ऐसे ही।